News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Hello, good afternoon and welcome to Money Matters, our daily show on all things to do with personal finance. You're listening to Money Matters on the official All India Radio News YouTube channel. This is an interactive show where you can also participate, and you can do that simply by typing your comments or questions in the live chat section. Or you can send us an email on moneymatters.air@gmail.com. That's moneymatters with an S. We announce the topic of the show one day in advance so that you can send in your questions in advance. So as announced earlier, our topic for today is Critical Illness Plan. I am V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मनी मैटर्स में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। वित्तीय साक्षरता और आपके वित्त से जुड़े इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन एक निर्धारित विषय पर चर्चा करते हैं और जैसा कि रवि ने बताया कि आज का विषय है क्रिटिकल इलनेस प्लान यानी गंभीर बीमारी बीमा योजना। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके सवाल भी शामिल करते हैं। सवाल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में। इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बातें हमने पहले भी इस प्रोग्राम में की हैं और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के साथ ही क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में। क्रिटिकल इलनेस क्या होता है और ये क्रिटिकल इलनेस प्लान कैसे काम करते हैं, इस बारे में आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हमारी जो जीवन शैली है बदलती जा रही है और जीवन शैली भी हमारी और साथ ही साथ कई ऐसे कारक हैं जो कि हमें बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और कभी भी कोई भी इनके चपेट में आ सकता है। और ख़ास तौर पर जो कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं ये काफ़ी गंभीर बीमारियां होती हैं और इनके इलाज में इंसान की ज़िंदगी भर की जो कमाई और बचत होती है वो सब खर्च हो जाती है। और इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान जो हैं लिए जाते हैं। तो रवि, हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि क्रिटिकल इलनेस प्लान है क्या। ये क्रिटिकल इलनेस प्लान जो है ये बेसिकली अगर आप इसको देखें नॉर्मल एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान अगर लेते हैं उससे कैसे अलग है ये जी। तो नॉर्मल जो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है उसमें जो आदमी लाइफ इंश्योरेंस लेता है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता जी। उसके मरने के बाद उसके फैमिली पे उस पे जो आश्रित हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। जो क्रिटिकल इलनेस, क्योंकि 3 रिस्क होते हैं जो आदमी नॉर्मली एक आम आदमी फेस करता है, उसको कहते हैं हम 3D इफेक्ट कहते हैं, डेथ, डिसेबिलिटी एंड ड्रेडेड डिजीज। तो डेथ में तो आदमी चला गया, जो उसके पीछे आश्रित है उनके ऊपर आता है। डिसेबिलिटी में आदमी जिंदा रहता है और ड्रेडेड डिजीज में भी आदमी जिंदा रहता है। तो उसको इन सिचुएशंस को नॉर्मली कहते हैं रिस्क के रूप में लिविंग डेथ कहते हैं कि आदमी जिंदा भी है और उसके कमाने के जो जराए हैं वो भी कम हो गए, उसमें भी दिक्कत आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में जो क्रिटिकल इलनेस जैसा प्लान है वो बहुत काम आता है, कारगर आता है। तो ये फर्क ये है कि सबसे बड़ा फर्क ये है जो नॉर्मल प्लान्स के इतर है ये कि ये आपको जीते जी बेनिफिट देता है। तो इसको स्पेसिफाइड बेनिफिट प्लान कहते हैं कि अगर आपको एक स्पेसिफाइड कंडीशन हो जाता है, जैसे आपने कैंसर कहा या हार्ट अटैक कहा, उसके अलावा और भी कंडीशंस है, स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, रीनल फेलियर है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो ऐसी किसी कंडीशन में अगर आपको डायग्नोस किया जाता है तो डायग्नोसिस पर पूरी रकम, चाहे वो 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, वो यकमुश्त दे दी जाती है आपको। अनलाइक अगर आप मेडिक्लेम लेते हैं तो जितना खर्चा होता है आपका अस्पताल में सिर्फ वही दिया जाता है, और अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो वो मृत्यु के बाद ही दिया जाता है जी। इस बारे में और चर्चा के लिए आज हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं उद्यन रे। उद्यन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम आज क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं उद्यन। तो ये क्रिटिकल इलनेस प्लान जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उससे किस तरह से अलग हैं ये? देखिए, सबसे पहले ये डिफाइंड बेनिफिट, जैसे रवि बता रहे थे कि ये बेनिफिट सीधा आपको मिलता है और कई बार डायग्नोसिस
के एक पीरियड डिफाइन किए जाते हैं कि आपको पॉलिसी लेने के 30 दिन तक आप क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद एक सर्वाइवल पीरियड होता है, वो अगर आप उसको पार कर जाते हैं तो तब आपको वो अमाउंट मिलता है। और ये अमाउंट जो है, अगर आप जैसे कि हम सब जानते हैं, ये जो प्लान्स हैं, ये जो इंश्योरेंस है, या तो आप एक राइडर के रूप में लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के साथ ले सकते हैं या स्टैंड अलोन ले सकते हैं। अब स्टैंड अलोन जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी देती हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी देती हैं, पर सबसे जो बड़ी बात है कि वो मुश्त रकम जो आपको एक तो मिल जाती है, दूसरा है कि उसके अंदर कुछ सब लिमिट्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि सर्जरी का एक लिमिट हो सकता है, उसके बाद टेस्ट के कुछ लिमिट्स हो सकते हैं। पर क्रिटिकल इलनेस प्लान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि हमने पीछे एक मनी मैटर्स के प्रोग्राम में बताया था, जिक्र किया था कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है, हेल्थ केयर का इन्फ्लेशन है, तो आम जो मुद्रास्फीति है, अगर मान लिया 5, 6, 7 पिछले 10 साल में तकरीबन औसतन 7% मुद्रास्फीति रही है, तो वो मेडिकल इन्फ्लेशन 15 से 17% तक चली जाती है। छोटे से छोटे कस्बे में भी ये देखा गया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एकदम से क्रिटिकल इलनेस का जो ट्रीटमेंट है, मान लीजिए कैंसर हो गए या हार्ट एलिमेंट हो गए, ट्रांसप्लांट्स हो गए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, जो भी कहिए, मतलब जो क्रिटिकल इलनेसेस जो हैं उसमें खर्चा इतना ज़्यादा होता है और उसके 2-4 इम्पैक्ट्स और होते हैं। एक तो ये है कि आप अस्पताल में जब जाते हैं तो वो उसका एक खर्चा होता है, तो जो कि हेल्थ इंश्योरेंस जिसके बारे में आपका प्रश्न था वो कवरेज होते हैं, पर उसके अलावा भी चिकित्सा में और चीज़ें होती हैं, फॉलोअप खर्चे होते हैं, फॉलोअप चीज़ें होती हैं जहाँ पे खर्चे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे एक तो रकम आपको ज़्यादा चाहिए होती है, कवरेज भी चाहिए होती है। कई बार एक इलनेस से आपको सेकेंडरी इलनेसेस हो सकती हैं या कुछ और बात हो सकती हैं, तो उसके वजह से आपको वो एक ज़्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लाइफ इंश्योरेंस जब आप राइडर के रूप में लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई होती है, तो जो मान लीजिए 100 रुपये का अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस सम इंश्योर्ड है, बीमा का रकम है, तो राइडर जाहिर है उससे एक छोटा सा उसका एक अंश होगा, 30% होगा, 40% होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो एक तरीका हो सकता है, अगर आप मान लीजिए बहुत यंग उम्र में हैं आप और आप चाहते हैं कि स्टार्ट करें, तो वो आप राइडर से स्टार्ट कर सकते हैं। पर इवेंचुअली जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, थोड़ी सी बढ़ने लगी और आपकी आय इनकम थोड़ी सी बढ़ी, तो आपको सीधा क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना चाहिए, सिंपली बिकॉज अब हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि कई इलनेसेस जो हैं, जैसे हार्ट एलिमेंट्स हैं या कुछ और एलिमेंट्स हैं, वो कभी भी स्ट्राइक करते हैं। 30s में भी लोगों को इम्पैक्ट हो जाता है। कैंसर जो है वो कभी उम्र नहीं देखती, वो कभी भी आपके साथ हो सकता है। तो ये जो फ़र्क है इसमें ये चीज़ है कि एक तो उसमें क्रिटिकल इलनेस जो प्लान्स है स्टैंड अलोन में, उसमें कवरेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कई कंपनियां जो है वेरिएशन देती हैं, कुछ कहती हैं कि 18, 14, 36 आप चूज कर सकते हैं, या प्रोडक्ट में ही ये होता है कि हम 54 देंगे। और वो एक तो कवरेज होता है, एक अमाउंट होता है और एक पीरियड होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जब आप राइडर करते हैं उसमें फ़र्क ये है, और जनरल इंश्योरेंस वाले में फ़र्क ये है कि लाइफ इंश्योरेंस वहाँ पे जैसे अपने राइडर का वो डायग्नोसिस पे ही मुश्त रकम आपको मिल गई और वो राइडर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पर जनरल इंश्योरेंस प्लान में आपने क्लेम किया, फिर वो देखेंगे कि हम रिन्यूअल करेंगे कि नहीं। कई प्लान्स में लाइफ टाइम तक रिन्यूएबिलिटी होती है, ठीक है। और कुछ जो जनरल इंश्योरेंस या स्टैंड अलोन जो प्लान्स हैं, तो वहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल की आप मियाद देख सकते हैं। तो वेरिएशंस काफ़ी आ गया है पिछले 6-7 साल में, यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट आए हैं, और हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे जो यहाँ पे देखने वाले सुनने वाले हैं वो उसको ऑप्ट करें। So you strongly recommend that a person should buy a critical illness plan. A critical illness, we have said, covers a living benefit that is paid to you in case you contract a serious illness, life-threatening illness like renal failure or cancer or heart attack. The other thing that we've established that critical illness does, as you mentioned, defined benefit, is there is no reference to actual expenses, because you might have gotten treated at a government hospital completely free of cost, but if you have a 20 lakh rupees cancer insurance plan, on diagnosis of cancer, you will be paid the entire amount of 20 lakhs without reference to whatever you paid at the hospital. Or you might have paid 50 lakhs, but you'll still be paid
20 lakhs by the insurance company. Now that we have done this, and you mentioned that you can buy it as a life insurance plan, you can buy it as a rider in a life insurance plan, you can buy it from a general insurance company, or you can buy it from a health insurance company. So if I want to take that call, where should I buy it? What would your advice be? What should be the factors that I should look at? Should I look at it as riders? Should I look at it as plans from life insurance, from general insurance, from health insurance? How should I choose? So that's a very obvious and that's a good question. It's the important thing is this, Ravi. I think this is my of course my personal opinion. So suppose you're starting off your work life, and you're in your 20s, say 23, 24, and in your family there is an established history of certain critical illnesses, and it's medically established that there are chances that you might have contract that kind of illness. So if there's a established history of heart ailments in your in a family, and doctors say that yes, you do run a risk of having that illness, then probably you should go whole hog, and you should go for a stand-alone critical illness plan which covers this element. So first, then you don't worry about the premium so much. In terms of categories, you straight away go for. Otherwise, what happens is, if you go for a rider, obviously the additional amount that you'll pay, rather the premium amount that you'll pay will be lesser. For a standalone critical illness plan, you'll obviously end up paying more. However, if you have this kind of a condition that's coming up, then it makes a lot of sense. The other thing that we need to also remember is that as you're going to grow older in a general insurance plan, depending on how the policy has been crafted, there's a very good likelihood that you might have to end up paying greater premiums. Okay, so it depends on how it's being. There's a lot of differentiation that's going on. So you need to keep in mind that if there are some benefits of getting in early, which there are, then what happens is you stand to benefit from there. Of course, there's this whole discussion about tax benefits, etc., under Section 80D, and now there are two variations that have come in. So we will probably not get into that, but you also get tax benefits for this, till 25,000 rupees annually. So if you want, you can actually get that. And similarly, all the tax deduction rules for under Section 80D apply here also. You need to check whether this the product that you're looking at qualifies for it or not. Typically, they do. Apart from that, you also need to look at the kind of lifestyle you're leading, the kind of environment in which you are, whether you can afford a certain kind of premium or not. Because the point is, if you end up spending, you get inside a policy where the premium is very high and you cannot sustain it year on year, then there's no point on going about it. You might as well go for a plan where you can sustain it. Also, in critical illness plans, there are top-up kind of facilities where when you're about to renew the plan, you can actually increase your coverage. So those things have started coming in, and some of them are very exciting products. I mean, it's an ironical space. Critical illness is something that you will cringe when we are talking about it. But what's happening is you actually there are products that have come in where you can increase your coverage. So as you grow older, the need for that coverage becomes more. So one of the other things it's worth mentioning to the audience here is that as you move along your years, your life risk, the risk from dying early is becoming less. And you are actually, the risk of getting ill and getting damaged by an illness is getting more. So therefore, so while a life risk is pretty much high in your 20s, because if you've got a dependent, you've just got married at 24, and you would have worked till 58. So that is the period of work life that's getting lost to your family. But at 45, you've already covered half that distance or most of that distance. What now is the risk is whatever you've saved and whatever you could save in the future might get impacted by that one small illness or one critical illness, which if corrected at the right time will
see you through. So these are some of the factors that you might have to see, and there probably are more. But these are some of the things that you might want to look at: your budget, your history, your lifestyle, the product on offer. All this is pretty good. And having said that, probably the one way to close this discussion would be, this point is that you probably need a health insurance indemnity policy. You need a critical illness, and you also need what is called a daily cash benefit insurance, where you get a daily cash payout. So when you have all these three, you get a good medical cover. We'll continue discussing critical illness plan on Money Matters after the short break. Welcome back to Money Matters. We'd like to tell you that our topic for tomorrow is cryptocurrency and Bitcoin. So if you have any queries about this topic, do email them to us at moneymatters.air@gmail.com, or you can ask your questions live between 4:05 and 4:30 tomorrow afternoon and listen to this show live. Coming back to the points that we're discussing, you mentioned that you should take all three. You should take a Mediclaim kind of an indemnity, you should take a critical illness kind of a plan, and also a daily cash benefit kind of a plan. Of course, buying more plans always has a cost aspect to it. Now, they say that the hospitals are full of people who wish they had bought more health insurance. Now, there's a question that a lot of people, because when we talk of critical illness, the first question that people ask is, I already have cancer. I've been diagnosed with cancer. Can I buy a cancer insurance plan? So what is the answer to that question? Well, in every insurance plan, Ravi, as we know that, there are, you have these benefits and you have your exclusion, what's called exclusion. So whenever we are buying, whether it's a health plan or anything which is a non-life plan, so whether it's an auto plan or a health plan, in this case we are talking about a critical illness plan, we need to check what are the benefits, which is of course the coverage and the amounts, and what are the exclusions. So what is the period where you cannot get covered, okay? If there's a pre-existing condition, when till what point will that be covered? So it probably depends from product to product, and there's obviously a wait out period that you have to wait out, and then you get contracted. If you have a pre-existing illness, then probably there'll be a particular treatment given out. The insurance company will either have a set rule about it, or they might take your medical records, and the risk underwriter may evaluate your case and then say whether they're going to give you that plan, and then at what premium. Of course, then that means you're a slightly riskier sort of a candidate. So they might just, if they cover you, they might just tell you that at what point they'll cover you and what is the premium that you'll have to pay, and then you can compare it with other offerings that you're getting. जी, आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर की बात की थी उद्यन, तो यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा अगर किसी ने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है और वो उस पर क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लेता है, या फिर वो जाता है कि क्रिटिकल इलनेस प्लान अलग से ले, इनमें दोनों में से किसको लेना समझदारी है? देखिए, ये काफी कुछ निर्भर करता। अगर आपका एम्बिशन, मतलब आप बहुत अच्छा सा कवरेज चाहते हैं, फिर तो आपको स्टैंड अलोन प्लान लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक कुछ शुरुआती दौर में हैं, आपका बहुत चंगे हैं, आपके थोड़े बहुत जो एनुअल मेडिकल टेस्ट होते हैं आपके ऑफिस में या कहीं और हो जाता है, वहाँ पे कुछ इधर उधर का नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है, तो आप सेफ्टी वास्ते आपने कहा कि मैं ये ले लेता हूँ, एक कवरेज रह जाएगी जब तक कि मेरे पास टोटल कवरेज में एक स्टैंड अलोन प्लान नहीं ना ले सकूं। जैसे कि रवि ने कहा कि कितना आप प्रीमियम देते चले जा रहे हैं, आपको इन्वेस्ट भी करना है, आपको ट्रैवल भी करना है, हो सकता है गाड़ी भी खरीदनी हो दुनिया भर की, तो पैसा जो है आपके पास इनकम लिमिटेड है, उसमें एक्सपेंस भी करना है, इंश्योरेंस भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। पर अगर शुरुआती दौर में आपके जो टेस्ट वगैरह, ऐसा नहीं कि ज़्यादातर हमारे देश में ये होता है, लोग कहते हैं हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, जबकि उनके पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। बाद में पता चलता है, टेस्ट होता है, जब कोई बीमार पड़ता है पता चलता है कि 5 साल से है, तो ठीक है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। हमें, अगर हम एनुअली चेकअप करते हैं, हम ख्याल रखते हैं, हमारे टेस्ट हो रहा है,
एविडेंस के बेस में अगर हम कहते हैं नहीं हमारा हेल्थ ठीक ठाक है, हमारे डॉक्टर्स ने हमें सर्टिफाई किया है हमारे ऑफिस या कहीं और के एनुअल हेल्थ चेकअप्स में, तो फिर वहाँ पे ये हिसाब किताब हो सकता है कि आपने कहा ठीक है अभी मैं उतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता तो मैं राइडर लूंगा, पर वो आप एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जोड़ नहीं पाएंगे। उसमें आपको एक फ्रेश जब लाइफ इंश्योरेंस प्लान आप ले रहे हैं उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तब आपने कहा कि ठीक है मेरे को अभी मान लीजिए मैं काम नहीं कर रहा था, मेरी शादी हो गई है और मेरे को हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ एक राइडर भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें कवरेज भी हो जाएगा, मैं इनकम कमा रहा हूँ, अगर क्रिटिकल इलनेस होते मेरे इनकम में थ्रेट है, इसलिए मैंने एक क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया, एक एक्सीडेंट राइडर ले लिया, वैसे व्हाटएवर। इसके बाद जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो तब आपको जरूर देखना चाहिए कि आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लें, को एट सम पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप 40s में चले जाएंगे वो बहुत ज़्यादा महंगा होता चला जाएगा। तो जितनी जल्दी इंश्योरेंस का नियम ये है, थंब रूल ये है कि जब आप ले रहे हैं तो आप ये कम उम्र में अगर लें तो बेहतर रहता है, कुछ फायदे होते हैं, कुछ बोनसेस मिलती हैं, कई प्रोडक्ट्स कई प्रोडक्ट्स में तो इतना भी सहूलियत दी गई है कि आप वहाँ पे कुछ वेलनेस से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आप अच्छा हेल्थ दिखाते हैं, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कंपनियां आपको शायद प्रीमियम में कम रिडक्शन करने के लिए राजी हो सकती हैं या आपको गाइड करेंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स जो हैं वेलनेस से जुड़ी हुई बातें हैं अब क्रिटिकल इलनेस और हेल्थ इंश्योरेंस में भी आ गई। तो अर्ली एंट्री के काफी फायदे हैं। Normally, the saying in the insurance industry is that you always buy insurance when you don't need it, so that you have it when you need it. So it's obvious that we have established that if you already have got cancer, you can't buy cancer insurance. So you need to buy it before that. Now the question that comes is, you touched upon it lightly in your answer, but if we specifically look at it, should I buy it at 30, 35, 40, 45 or 50? By 50, everybody has understood the concept. They will buy it. But if I have to look at before 50, 30, 35, 40, 45, what is that optimal age when I should buy? Because the simple answer is that if I buy it at 25, it will be probably 1,000 rupees for 10 lakhs. So it will be very cheap. But I would not be at 20, I would not be interested in buying cancer insurance, even if I have cancer in my family. At 30 also probably not. But at 45, it will probably become 10,000 rupees for 10 lakhs. So what is that optimal age when the premium and the suitability both have a equation? Well, that's a good point, Ravi. I would say I can only hazard a view here, which is then when you need protection when you have something to lose, right? And when you think it is really significant to lose. Now, when does that something happen? When do you reach that stage? Typically, when you're getting married, then you're responsible for another person. When you're having a child, you're responsible for another person. So that is roughly the time when you should be increasing. If you don't have a life insurance, get life insurance. If you have life insurance, increase your life insurance. If you don't have health cover, you need to have health cover. And if you don't have critical illness insurance, that is a very good time to think and get some kind of a coverage. And then you try and increase it, or maybe expand the portfolio a little bit, because one episode of health emergency can set you back by a lot. Just think about it. Yeah. So suppose you've just saved out 5 or 10 lakhs, and one hospital visit and 2.5 lakhs you get set back. You've lost 1 year of progress. And people who understand compounding, which is taught in class 5, a lot of us are not aware. But what happens is when you get set back, the damage of lost time is so much at the end that it's phenomenal. So you just have to keep doing maths. So in the first 10 years, the rate at which money grows, the next 10 years, it practically whatever you've earned in the first 10 years in terms of return, that actually is pulling you through. So that is the kind of thing that happens. So what happens is, if you end up spending money, you depend to your investments. So something in the future is getting compromised. So whenever you have something to lose, which is your present, you could be losing out on your income or whatever, and your future, because that 2 or 3 lakhs could make a difference between your child going to a great institution and maybe not so great institution. So it is critical, as you say, to have a critical illness plan, or as they say in Hindi, jab jago tabi savera. So it's never too late to buy insurance, and in this case it's probably never too early
to buy insurance. That's all that we have in this edition of Money Matters. You can watch this show again on our YouTube channel. It's part of a playlist called Money Matters. Once again, the topic for tomorrow's show is cryptocurrency and Bitcoin. Do send in your questions on this topic in advance at moneymatters.air@gmail.com. उद्यन कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Udayan. Thank you, Vishal. And that's a wrap on this edition of Money Matters. Namaskar. नमस्कार।